So finally the results are out, Pradeep ji. Yes, sir, yes, sir. Results आ गए बाहर. Yes. और मैं जो अपेक्षा रखी हुई थी मैंने कि भाई बीजेपी जो है वो 350 सीट या 335 या 305 या 315 लेकर के आएगी, वो अपेक्षा बिल्कुल पूरी नहीं हो पाई. भारतीय जनता पार्टी रुक गई है अभी 240 के आसपास. और बट आप हमेशा अनुमान भी करते कि मिनिमम तो 270 आ ही जाएगा, बट इवन दे डिडंट रीच मिनिमम भी नहीं पहुंच पाए. तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है. उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सब लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय सिया राम, हर हर महादेव. महादेव. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम. Chinese में नहीं आओ, Japanese में konnichiwa. Sir. Amariyako Jambo for viewers in East Africa, South Africa, at the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Yes, and all of them are watching what is happening in India very, very, very closely indeed. Now the point is, as far as the BJP is concerned, perhaps could it be true that the RSS actually didn't work for the BJP? I mean, I'm now all sure. these factors come into play. Yes. Everybody wants to believe that yes, the RSS never supported the BJP. जी. That is, and बात चल ही रहा था, लोग बोल ही रहे थे, और नड्डा जी उसमें और तेल डाल दिया, बोले कि नहीं अभी हमारी जरूरत नहीं है, अभी हमें जरूरत नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गए. जी. एक वक्त था जब हमको उनके शायद सहायता रहा होगा, but now we don't require them. क्या बात है सर. Yes, and then they're paying the price of overconfidence. Now at the moment with us, let's apart. quickly go across to Dr. Surena Malhotra. I think she's not there right now. I'm so sorry. There seems to be a problem as usual with the guests. Well, so Pradeep ji, at the moment what we are looking at is the NDA reaching somewhere around 290, 293. Exactly. And the India Alliance reaching somewhere around 230, 231. 232, 233 or Yes, thereabouts. मतलब आसपास. और कांग्रेस बड़ी खुशी है कांग्रेस में. मतलब माशाल्लाह वो जीत गए, कितने 100 के करीब सीट जीत गए, 99, 98 के करीब सीट जीत गए. Sir, at least they have more than double. It's nearly double the efforts. Nearly double जो पिछली बार आई थी, 52 सीटें आई थी. तो वो मतलब एक्चुअली स्पीकिंग जो उनका इंटरनल सर्वे था वो यही बोल रहा था कि 100, 104 अगर आ भी जाए तो हम लोग बड़े खुश हैं. सीधी बात है. But the main story right now is Mr. Sharad Pawar's efforts at trying to woo Mr. Chandrababu Naidu and Mr. Nitish Kumar. Exactly. नायडू और नीतीश दोनों को n स्क्वायर, दोनों को अगर इस तरफ ले आओ तो हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए. हो सकता है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार है उसको 13 दिन के बाद इन्होंने अलविदा कर दिया था. हो सकता है कि इस बार शायद मोदी जी के साथ भी वही कर दें. ऐसा. And what you right is perfectly right. Sharad Pawar ji तब भी कुछ रोल किया था. He called up Mayawati. He called up everyone. Yes, yes. And Mayawati switched sides. Yes. And I think Atalji lost by. He lost by a very big margin because nobody supported him at that time. बिल्कुल. The second time he lost by 1 vote. And that was the time when Mayawati was there. Yes. He lost by 1 vote. Yes, yes. And the third time he completed his term. बिल्कुल. तो लेकिन जहाँ तक पहली टर्म का प्रश्न है, मुझे अभी तक याद है शरद पवार साहब ने एक लाइन बोली थी लोकसभा में कि ये बिना दुल्हन का दूल्हा कैसा है. इस किस्म की उन्होंने लाइन बोली थी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी emerged as the single largest party certainly, but they don't have enough numbers. That's what he had said at that time. No, I really, Sharad Pawar ji can do all these things. Now, Yes. when you discussed all these things, you told that he could talk to Naidu, Chandrababu Naidu. He has got good, fantastic relationship with him. Yes, he has. He could talk to Nitish Kumar. Yes, he and has. He has fantastic. In fact, Nitish Kumar and Sharad Pawar ji was the first to try and cement the India alliance. That's right. They worked together. Nitish Kumar coming here and Sharad Pawar ji सबको बुला के press conference करा के. अब उसमें प्रदीप जी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आएगी कि नीतीश कुमार जी की कितनी सीटें आई? 12 की 14 कितनी आई? Nitish JDU 12 सीटें हैं और 16 सीटें हैं चंद्रबाबू नायडू जी. Yes. तो अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बिकॉज neither of them is going to come this side unless and until they are offered the post of prime minister. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू जी को प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाए. आ जाइए और रूल कीजिए. ऐसी क्या बात है? बिकॉज आई टेल यू व्हाट, देयर हेट्रेड ऑफ नरेंद्र मोदी यूनाइट्स देम ऑल. सीधी बात है. और कुछ भी कर लेंगे ये लोग. जहाँ तक कि कांग्रेस का प्रश्न है, बाकी सारे पार्टीज का प्रश्न है, समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, ये सब लोग इकट्ठे आए हैं
कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को रोका जाए प्रधानमंत्री बनने से। और अभी मौका है इनके पास, मौका इनको मिल गया है। अब मौका देख करके चौका मारेंगे या आउट होंगे मालूम नहीं है मुझे। That I don't know. Ideally, if the Congress is forming the government, it has to be Congress-driven government. I mean, the days of आप जानते हो देवगौड़ा कहाँ से कहाँ पहुँच गए और प्रधानमंत्री बन गए, I.K. गुजराल, what was his number, कभी जिंदगी में खुद जीत नहीं पाए थे, वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। चंद्रशेखर, though in olden times he was something, but when he became the prime minister, it is all minority, small, one party man, becoming the prime minister. And that was the darkest days of democracy. We hope that the dark days of democracy don't come back again. जी। Let it be led by either the BJP or the Congress. If the Congress led India Alliance, then Congress leads it. Let them have their prime minister, and then you can't. I probably believe that the darkest days of democracy was when Deve Gowda, I.K. Gujral, Chandrasekhar, Vishwanath Prasad to a certain extent. So in effect, what you're really saying is that the Congress support from outside doesn't work. But this time it won't be Congress support from outside. Congress will be part of the government. But the only thing is, why would Chandrababu Naidu or Nitish Kumar come over to this side unless and until he's offered something? Now, what can he be offered here, which he doesn't have as far as Mr. Modi is concerned? The only thing is the post of Prime Minister. That's it. उसके अलावा जीत तो गए हैं वो आंध्र प्रदेश असेंबली भी जीत गए। Sharad Pawarji is capable of that kind of googly because and he could cement it well for him also. नहीं बाकी साहब मान भी जाएंगे ऐसी का बात। Yes. क्योंकि देखिए साहब सीधी बात है कि अगर नीतीश कुमार जी को बोल दिया जाए प्रधानमंत्री बन जाइए, चंद्रबाबू नायडू को बोल दिया जाए कि आप चीफ मिनिस्टर रहिए, यू रिमेन चीफ मिनिस्टर, लेकिन आप जो हैं आप जनाब इधर आ जाएं, मतलब चंद्रबाबू नायडू को कह दिया जाए आप अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनवा लीजिए यहाँ पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। And when Sharad Pawarji says that I have not spoken to any of them, that means he has spoken to them. Yes. that is the way Sharad Pawarji works. When he says I have not done that, you'd be rest assured he's already done and cemented it. And he's telling us that no, I'm not. That's not. Never came across as a thought to me. And I would. Whenever he says no, that means yes. Yes, bilkul. And knowing him very well. Do we have the guest with us or no? I mean, can anybody hear me, please? They're checking the audio, video. All right, thank you so much that you are checking the audio and video. But here, Samajwadi Party has been something out of the blues, 37 seats. I mean, that is great achievement. You had the Samajwadi spokesperson on this show, and every time they said that we are going to perform, and we disbelieved them. Like, where caste equations are not in your favor, Yadav, Muslim और Indian National Congress के वोट लेके आप क्या करोगे वहाँ पर? When the entire caste and subcaste are with Prime Minister Modi because और सबसे बड़ी बात मिसकैलकुलेशन कहाँ हुई हम लोगों की प्रदीप जी? Yes sir. वो हुई मायावती जी के वोट को लेकर। Exactly. कि मायावती जी का वोट उनको नहीं पड़ा। Yes. जो जाटव वोट है उनको नहीं पड़ा, वो जाटव वोट बिखर गया और वो जाटव वोट काफी गया कांग्रेस की तरफ, काफी गया समाजवादी पार्टी की तरफ, बीजेपी की तरफ नहीं गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में आपको ये रिजल्ट देखने को मिला है और छोड़िए महाराष्ट्र में ये रिजल्ट देखने को मिला है ना प्रदीप जी। महाराष्ट्र में भी हम लोगों की अपेक्षा यही थी कि एक तरफ प्रकाश अंबेडकर जी और दूसरी तरफ मायावती जी, ये सब लोग जो हैं एमवीए का वोट काट लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए, सीधी बात है। एंड उत्तर प्रदेश में तो वो चंद्रशेखर आजाद रावण जो हैं वो जीत गए साहब। और मुझे ऐसा लगता है अब तो उत्तर प्रदेश की जो पूरी राजनीति है वो तो पूरा whole thing will take a new turn because that man is dynamic, he is not scared of anyone, he takes on people head on. In the meantime, I think we've got Dr. Surena Malhotra with us and I'm sure she must be a very, very, very happy person. Let's go straight across to her. Dr. Malhotra, very good evening. Yes, good evening. And Namaste. Congratulations. Yes, hearty congratulations Rightfully to everyone. happy. To the Mumbaikars, to the Maharashtra people, everybody, and all over also. So well fought. तो शरद पवार जी ने दिखा दिया कि असली पवार कौन है। Yes, certainly, definitely. और ये भी सबको प्रतीत हो गया कि भाई असली एनसीपी कौन सी है। जो बात आप यहाँ पर कर रहे थे इतने दिनों से जी, now finally I think people must be convinced that hey, this is the real NCP. Exactly. So what is the mood like now, ma'am? What is the mood like now in the NCP? जरा बताएं उसके बारे में।
Everybody is so thrilled. Everybody is so thrilled. I mean, we are so proud of Pawar Sahib, Supriya Tai, and all the candidates who have won. I mean, it's a really a very, very positive mood. I mean, it's absolutely very. इतना strike rate हम लोग का इतना अच्छा strike rate है कि आप पूछिए मत, इतना अच्छा strike rate. अब देखिए. Dr. Surendra Malhotra ji, Sharad Pawar ji, mastermind, masterpiece, what a stroke getting the MVA together. And as soon as they got the MVA together, there were shockwaves across the country that this is a winning formula. And then Amit Shah and Modi planned that nahi todenge to 48 ke 48 jayenge. Actually, that was a fact because your vote share together, undivided, was more than 50%. There's no way that BJP could even get one seat. Exactly. So, again, as you said, the master stroke played by the classic player, political mastermind, Sharad Pawar Sahib. Yes. Initially, initially when BJP was concerned that they were overconfident because last time, I mean, it was 41, 42, they were used to those type of seats, you know, in the earlier. And We have an audio problem. Can we check, please? Frozen. We also have a net problem. Can we check, please? Why is the thing frozen? या जी हाँ, मुझे भी दिख रहा है साहब, फ्रीज हो गया है. आपने मुझे कान में बताया कि फ्रीज हो गया है, मुझको भी दिख रहा है. तो ये फ्रोजन फ्रेम जो है यहाँ पे क्यों लगा रखा है साहब? जी, right. So in effect, the fact remains that as far as Sharad Pawar is concerned, Sharad Pawar has shown what he is. तो अभी जो माशाल्लाह अजीत दादा पवार जो अच्छी बातें बोल रहे थे प्रदीप जी, शरद पवार जी के लिए बुढ़ा हो गया है, ये हो गया है, 85 साल का हो गया है, कब तक चलोगे तुम, ये कब करोगे, वो कब करोगे. आई वंडर व्हाट मिस्टर अजीत दादा पवार इज गोइंग टू से नाउ. अब क्या कहेंगे वो? एक और वो भी सुनील तटकरे साहब जीते हैं उनकी तरफ से, और सुनील तटकरे अपने बलबूते पे जीते हैं, अजीत दादा पवार के बलबूते पे नहीं जीते साहब. तो आनंद गीते को जिन्होंने हराया है, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ हिमसेल्फ. व्हाट डज अजीत दादा पवार हैव टू डू विद दैट? तो अब क्या करेंगे ये? And probably the support of the BJP. The BJP did perform very well. In fact, in Konkan also they performed excellently even last time. तो उनका support, उनका vote share लेके he Tadkari has won. Now Ajit Pawar जहाँ I think 4 constituencies, 3 हार गए including Baramati. Now the entire Pawar Sahib, Sharad Pawar ji, 7 seats, he has won 7. Now that's an achievement. 7 out of 9. What a stroke play. अभी आप बोल रहे थे कि 37 सीटों में समाजवादी पार्टी आगे, अब 38 में आगे हो गई है. Yes. It has gone ahead in 38 seats. Yes. And the Congress is back to being ahead in 99 seats. They've already won 43. Correct. And the BJP is down to 239. Lost 2 more. Ji, Dr. Surendra Malhotra is back with us. Dr. Malhotra was talking about Sharad Pawar Sahib. Yes. His ability, the way he created the MVA, and now he's going to play a fantastic role in cementing a center with the Congress and everybody. Dr. Malhotra. Yes. And that's what I said. I don't know whether I was there when I said that this time it was a fantastic thing that everybody fought unitedly. This is what Pawar Sahib, this is what Uddhav Ji Thackeray, Congress, all of them had decided that they will fight together for the betterment of the all the Indians, all the Maharashtrians, and who have sort of BJP का जैसा मतलब उन्होंने सोतेला ट्रीटमेंट महाराष्ट्र को जैसा दिया था, तो वो सबको बचाने के लिए सब लोग साथ आए एंड उसके रिजल्ट दिख रहे हैं. यहाँ पर मुझे एक बात कहनी है मैडम. यस. सुरेंद्र मल्होत्रा जी. यस. द वे सुप्रिया ताई बिहेव्ड, सुप्रिया सुले साहब ने जो अभी बिहेव किया है, डॉक्टर सुप्रिया सुले, after she was told that she has won, she actually congratulated Sunitra Pawar for a very well fought election. Look at the class, look at the generosity of spirit and the civilized behavior, which speaks volumes for where she comes from. We are talking about Supriya Sule here, which is fantastic. Certainly. In spite of all the provocation. What would you like to say to that, ma'am? Certainly, and in fact, at the start of the election, also, when Sunitra Pawar, this thing was declared. In fact, when they met, also, she welcomed her and hugged her, and she's never ever criticized her. Never ever. It was always like she always said that this is एक वैचारिक लढाई आहे आणि ती आम्ही लढणार आहोत. याच्यामध्ये
See, Supriya Dai, she will definitely always give, importance to another lady. This is what they come from. You can't come down on the low level and then criticize and all. That is जी. what I'm happy to be in this party. So I would love to know what the Prime Minister will have to say to that now. क्योंकि उनकी शब्दावली तो जरा मैं खुद शॉक हो गया मैम। मैं तो प्रधानमंत्री जी को जानता हूँ 2002 से, उनको तब से जानते हैं। मतलब ये इनको क्या हुआ, कौन उनको एडवाइस कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि It was as if there was a lot of frustration coming in, and in that frustration, the great person is that you have to remain calm and cool. So this was absolutely uncalled, and people saw through all this. People saw through all this. The result in Maharashtra shows that people had great faith in Mahavikas Aghadi, and they wanted a change. That they certainly wanted a change. एंड जो इतनी रैलियां हुई, इतना सब कुछ हुआ, तो वो लोग भी विचलित नहीं हुए। इनफैक्ट ये इलेक्शन सॉर्ट जनते ने हाथ में लिया था, अपने मुद्दों के लिए उन्होंने फाइट किया है जी। और बीजेपी ने आपकी बहुत मदद करी यहाँ पे, तो सीधी सादी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मदद करी आपकी पार्टी तोड़ करके, वो सिंबल उधर दे करके, नाम भी उधर दे करके, वही उद्धव जी के साथ किया। तो लिहाजा जहाँ तक आप लोगों में सवाल है, आपकी तो मदद हुई है यहाँ पे। मैंने तो पहले बोला ना कि जैसे हमारे पार्टी को, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसके आगे शरद चंद्र पवार लग गया, और विजय की तुतारी जो पहले से ही हमारे हाथ में आ गई। तो ये दो बहुत अच्छी चीजें हो गई थी। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस, एक जो डिटर्मिनेशन, जो कार्यकर्ताओं के भी, जो पदाधिकारी थे, सब में ये एक डिटर्मिनेशन आ गया था। एंड यू सॉ द वे पवार साहब थ्रू आउट द वे, जैसे कि पैरों को भिंगरी लगा के सब जगह पे जा रहे थे। At his age, he doesn't like that we talk about his age, but at his age, in the scorching heat, he was everywhere. कितनी प्रचार सभाएं ली उन्होंने, and this is what he set an example. Even सुप्रिया ताई का आपने देखा कैसे लगे रहे थे, कितना प्रचार किया, कितना, मतलब डे इन एंड डे आउट सब चल रहा था। बहुत बहुत काबिल तारीफ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जब अजीत दादा पवार साहब को एक सीट मिली है, वो भी सुनील तटकरे साहब की, जी, वो भी सुनील तटकरे साहब खुद जीते हैं, उसमें अजीत दादा पवार का क्या कंट्रीब्यूशन, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था। वो भी सुनील तटकरे जिनका जो काम, जो जब भी वो पवार साहब के साथ थे, उस समय का जो काम है, उसी पे उनको मिला है एक्चुअली जी। एंड नाउ शरद पवार साहब, now the whole political जो है सब कमेंट्री यही चल रहा है कि पवार साहब has already talked to Chandrababu Naidu, पवार साहब has already talked to Nitish Kumar and पवार साहब together clobbered this India alliance. They began the India alliance, they cemented the India alliance. So definitely something is happening, something is cooking up. Nitish Kumar with 12 seats, Telugu Desam with 16 seats, and these two come this side. Then you reduced Narendra Modi ji to NDA to a minority. They'll be in a minority and you'll be in the majority. So all things working out. And when Sharad Pawar ji is there, anything is possible. They say Modi hai to mumkin hai. What I think we can say na Sharad Pawar ji hai to mumkin hai. तो मुमकिन है, पवार जी और उनके साथ बाकी उनके इंडिया अलायंस के सब लोग साथ में है, तो मुमकिन है, डेफिनेटली। So you have any inkling whether Pawar साहब talked? Because Pawar साहब जब बोलते कि मैंने नहीं बात किया, यानी उन्होंने बात किया है. We all believe that. How do you see that? So we don't really know, but we will. Let us keep guessing for some good results. क्योंकि उसके पहले भी एक बार पवार साहब had prevented अटल बिहारी वाजपेयी जी from getting a majority. बहुत पहले की बात है, जब वाजपेयी जी की सिर्फ 13 दिन की जो सरकार थी। तो क्या इस बार भी शरद पवार साहब अपना कुछ जादू करेंगे लोकसभा में? मतलब पूछ रहा हूँ। Let's see. Tomorrow they'll be meeting. All of them will be meeting now. Let's see what happens, and we are also waiting. But congratulations to you. So what do you expect will happen now? Because all the other NCP workers, all the karyakartas who wanted to switch back to Sharad Pawar Sahab, who were there under duress, I think now the way should be open to them to come back. I'm not talking about the leaders. I'm talking about all the karyakartas. See, कार्यकर्ता मैंने जैसे बताया, towards the end, many karyakartas had already they have come, like say from Bandra East area and all. Many of them had already come, and now I think looking at all this, I think many of them will think about coming back, and karyakartas are always welcome. जी. You know, Dr. Malhotra, you got
30 out of 48, 30 out of 48 यानी you got more than 62%, 63% share आपने already this पवार साहब ने ये combine करके MVA का vote share around 62% लाया because you have won 62% of the seats. Now this is a threat when the Vidhan Sabha is coming. 4 महीने के बाद विधान सभा इलेक्शन है. Now looking at what happened here, we all can see what's going to happen there. The deadly combination, the MVA is going to sweep the Maharashtra Assembly elections. That's it. How do you see that? We should not be off guard now. The work really starts now. Work starts again. So we have to work hard. Everybody has to work hard, and the same way, united way, they have to all work together. So let us hope for best. And I think this will give a good boost to everybody. No, the formula is clear. The formula is clear. You're going to sweep the Vidhan Sabha. You're going to sweep the Vidhan Sabha. After that BMC elections, again you're going to sweep that. Because this is a win-win formula. This is a win formula. Nobody can. With this formula, you're not going to lose anything. You're just going to gain. Correct. Yes, correct. So, as you said, all the old timers want to come back now. Yes. Let us see. From tomorrow, all the stocks will start. Yeah. But then we will always respect the ones who have really shown faith and been there with us during the thick and thin. That is more important, That is more who was there, who had remained. Right. Thank you so much, ma'am, and congratulations again. Fantastic And, job. and Very I would like to say thank you to your channel, because you all are the ones who gave us an opportunity to tell our story, tell about our fight to people, and there are very few of the channels who did that. But so thank you so much. Ma'am, that's our job. We are journalists. Yes. But thank you so much. I thought that was the job of every journalist. हर journalist का काम यही होता है. It's like you are a doctor. You would not do anything unethical. You would never recommend a medicine just because a pharma company told you to, unless you were very sure of it. So is the case with journalists. We are journalists. Yes. भाई छोटे journalist हैं, छोटा channel है, कोई बात नहीं. But we don't conduct exit polls, just like they conduct. The way they exit. Oh my God! how I mean, you could see just in one day's time how the things changed. And wherever you campaign, the candidates won. Varsha Gaikwad won. A lot of people, all over Mumbai, all campaigned. They all won, except Piyush Goyal. Except Piyush Goyal. That was like okay. So. अकेले पीयूष गोयल जी, अकेले पीयूष गोयल जी जीते. और अभी रविंद्र वाइकर और जनाब अमोल कीर्तिकर साहब के बीच में अभी दंगल जारी है. रिकाउंटिंग शुरू है शायद वहाँ पे, क्योंकि एक बार उनको विक्टर डिक्लेयर कर दिया, फिर 39 वोट से शायद रविंद्र वाइकर साहब को दिखा दिया आगे. अभी दोबारा रिकाउंटिंग हो रही है, पता नहीं अब ये कब तक चलेगा, मुझे मालूम नहीं है. बट इट्स अ वेरी क्लोज फाइट. लेकिन जो पहले बोल रहे थे कि भाई क्लीन स्वीप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं हुआ है. आई थिंक दी MBA has done really well. So congratulations, ma'am. Congratulations again. And let's see what Mr. Sharad Pawar pulls out of his hat now. He's the one who's capable of pulling a rabbit out of a hat. And you never know. Both the ends, that is Naidu and Nitish, might just be convinced by Mr. Pawar. One never knows. You're already convinced, I think. जी, अभी तो एक मीम चला हुआ, पता नहीं आपने देखा नहीं, मैं इनको बोल देता हूँ, आपको भेज दें कि मोदी जी जो है नीतीश कुमार जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही. चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, साधुवाद. आप लोगों ने बहुत बढ़िया इलेक्शन लड़ा. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. राइट.